बहुत मुश्किलात हो जाएंगी रावलपिंडी रीजन के लिए अगर ये विकेट हासिल नहीं करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा कुछ हमें फायर पावर या वेनम नज़र नहीं आया इनकी बॉलिंग लाइनअप के अंदर, और ना ही ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्पिन होता हुआ दिखा है। काफ़ी कुछ डिपेंडेंट था मेहरान मुमताज़ पे, लेकिन उन्होंने बहुत ही तेज़ बॉलिंग की, बहुत फ्लैट बॉलिंग की कल, जिसकी वजह से रावलपिंडी को बहुत नुकसान हुआ है। और उसके अलावा उनकी फील्डिंग, 3 कैचेस ड्रॉप हुए कल। तो जब आप इतनी क्वालिटी साइड को, जिसके अंदर अहमद शहजाद हों, आबिद अली हों, साद नसीम हों, आप उनको इतने मौके देंगे तो वो बहुत आगे निकल जाएंगे आपसे। और ऐसे ही कुछ यहाँ पे हुआ है, क्योंकि शुरू में कल मुनीर रियाज ने कैच लगवाया जिससे वो बसर ने ही ड्रॉप किया था, दूसरा ओवर का खेल था। उसके बाद फसी ने एक कैच छोड़ा, फिर विकेट कीपर ने भी एक कैच छोड़ा। तो जब इतनी क्वालिटी बैटिंग को आप इतनी आसानी से मौके देते रहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा मैच में वापस आना। ये विकेट जो है बैटिंग के लिए ज़्यादा सहल लग रही है, क्योंकि जब दूसरा दिन होता है तो मोवर का इस्तेमाल किया जाता है पिच के ऊपर, और जो घास है ये किस हद तक ये कम हो जाती है पहले दिन की निस्बत। हालांकि अभी भी इस पर आसार हैं, इस पर हरियाली आपको नज़र आती है। अगर आप अच्छे फास्ट बॉलर हैं तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए महारत और वो मलका होना ज़रूरी है आपको। एक कतई शॉट नहीं था साद खान के पास, और कल हुनर की, रफ्तार की कमी नज़र आई रावलपिंडी रैम्स के फास्ट बॉलर्स के। हम हैरत हुई कि पिंडी पोठोहार यहाँ से तो अच्छे फास्ट बॉलर्स आ रहे थे, शुएब अख्तर, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ या मोहम्मद अकरम भी खेले टेस्ट क्रिकेट, अजहर महमूद थे इस इलाके से, लेकिन इस टीम का तो लगता है रफ्तार से कोई लेना देना ही नहीं है इस बॉलिंग अटैक का। जी हाँ, एक तो वैसे थोड़े फास्ट बॉलर्स कम आ रहे हैं, और एक जो हैं भी उनको बाहर बैठा रखा है, शराज खान। आई थिंक वो ऐसे बॉलर है जिनके अंदर पेस, बाउंस और थोड़ा एग्रेशन है, जिसकी वजह से शायद लेकिन आज वाला जो ये वाला पिच था, उन्होंने यही सोचा होगा कि कंडीशंस हैं आगे बॉल करने वाले, मुनीर रियाज हैं जैसे, काशिफ अली हैं, ये आगे बॉल करते हैं, लेकिन स्टिल तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है शराज खान को ना खिलाना। और उसके अलावा शायद जब 2 टीमें बन गई, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की टीम जब अलग-अलग खेलेगी, तो काफ़ी सारा टैलेंट आपका इस्लामाबाद की टीम से खेल रहा है, जैसे मूसा खान है, अब वो इस्लामाबाद से खेल रहे हैं। तो जब इतने करीब 2 शहर हों और 2 डिफरेंट टीमें होंगी तो वो टैलेंट जो है वो थोड़ा बढ़ सा जाएगा। अनफॉर्चुनेट है इस्लामाबाद ग्रेड 2 खेल रही है, लेकिन शायद ऐसे ही प्लेयर उनको जितवा के ग्रेड 1 में लेके आएंगे। तो एक वजह ये है फैक्टर है, और दूसरा प्लेइंग 11 में सिलेक्शन का फैक्टर। एक रन लेना चाहते थे, लेकिन रास्ता रुका 365 पर 3। कल बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए थे कप्तान साद नसीम, पहले मैच में डबल सेंचुरी स्कोर की थी। के साथ अहमद दानियाल हैं, एजाज जूनियर भी मौजूद हैं जो कि हेड कोच हैं, काफ़ी खुश होंगे, इत्मीनान होंगे, अच्छी परफॉर्मेंस दी है टीम ने दोनों मैचेस में। दूसरा रन लेना चाहते हैं, वहां पर बिलावल भट्टी थे जिन्हें मुबस्सिर खान की जगह पर भेजा गया, लेकिन नतीजा वही ढक के, हम यहाँ पर 2 पात कहेंगे 3 नहीं। बहुत कंडीशंस आसान हो गई हैं। आमिर जमाल और साद खान अनलकी होंगे कि बड़े रन्स नहीं करते हैं यहाँ से, क्योंकि कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है सुबह से
पिच की तरफ से जीरो असिस्टेंस है, बॉलर्स में पेस भी नहीं है, ओवरहेड कंडीशंस भी बहुत शानदार हैं, तो हर चीज़ जो है वो इस वक्त लाहौर वाइट्स की फेवर में है। अच्छा खेल रहे हैं आमिर जमाल जो हैं, बर वक्त अगले कदम पे भी आ रहे हैं, अच्छी टेक्निक दिखा रहे हैं, विकेट के दोनों जानिब रन बनाते हुए भी नजर आए हैं। आमिर जमाल, इन पर नजर रखने की जरूरत होगी। काफी फिट क्रिकेटर हैं, खास बात यह है कि लंबे स्पेल कर सकते हैं और इनकी बॉलिंग फिटनेस है, इसमें कोई शुबा नहीं है, अच्छे फील्डर भी हैं। वैसे भी जब आप मियां वाली से आते हैं तो आप मजबूत जिसामत के ही मालिक हो सकते हैं। और ये शानदार शॉट, ये महारत मुसल्लमा, लाजवाब ऑफ ड्राइव आमिर जमाल का। यहाँ बहुत ही शानदार ये ड्राइव एक्स्ट्रा कवर की जानिब, ये शो करता है कितना टैलेंट है। देखिए और गलत बॉल, आगे पिच की बॉल, लेकिन ये पिक्चर परफेक्ट है, ये स्टाइलिश शॉट है, फ्रंट आर्म बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में, हाई एल्बो, अच्छा स्टांस, और ये बहुत ही अच्छा कैमरा वर्क भी, सब कुछ ही अच्छा था सवाए बॉल के। जाने दिया, इससे ऑफ स्टंप के बाहर। आमिर जमाल ये तेज बॉलर हैं और इस सीजन में अब तक इनसे तेज बॉलर जो है लाहौर में तो हमने नहीं देखा। बताया गया है कि अब ये इस्लामाबाद से ये लाहौर शिफ्ट हो गए, अपनी क्रिकेट पर यहीं रह के फोकस करना चाहते हैं, लाहौर के लिए खेलना शुरू किया है। लाहौर को भी ज़रूरत थी एक तेज़ बॉलर की। क्योंकि यहीं पर इनको मौसम गर्मा में प्रैक्टिस करते हुए देखा गया है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में और एलसीसी ग्राउंड पर, तो ये दोनों ही एक दूसरे की इस वक्त शायद ज़रूरत है, लाहौर और आमिर जमाल। यहाँ अच्छे अग्रेसिव नेचर के इंसान है, और जैसे आपने कहा कि लाहौर के क्रिकेट में भी काफ़ी कुछ बेहतरी आने की ज़रूरत है, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि जो सिलेक्शन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा चर्चा है इस मैच की। अच्छा शॉट, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग भी। मुबस्सिर खान इस बार आड़े आए, लाहौर वाइट्स 371 पर 3। चौरानवे ओवर्स के खेल में सिर्फ 3 ही विकेटें रावलपिंडी की टीम हासिल कर पाई है, और बड़ी हद तक बैट्समैनों के रहमो करम पर रही है, क्योंकि 234 पर उनको पहली विकेट मिली थी। अहमद शहजाद, शायद ये भी नौबत नहीं आती अगर वो कल रिटायर्ड आउट नहीं होते, और ये एक और रन हासिल कर लिया गया। तो लाहौर वाइट्स कितने रन्स बनाना चाहेंगे और कब तक अली? देखिए अर्जेंसी तो लग रही है, जब से हमने सुबह मैच शुरू हुआ है रन्स की तरफ जा रहे हैं दोनों बैटर्स। 43 रन्स की पार्टनरशिप सिर्फ 44 बॉलों पे की है, तो जो हालात चल रहे हैं, जो बॉलिंग है, जो फील्डिंग है, तो कम से कम यहाँ से 500 रन्स तो इनको करने चाहिए लंच तक, या लंच के 1 घंटा बाद तक।
क्योंकि इनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि पिच में ज़्यादा कुछ है नहीं है, तो अपने बॉलर्स को आपने इनफ टाइम देना है उन 500 रन के बाद कि वो 2 बार ओपोनेंट्स को आउट कर सकें। ज़्यादा डेप्थ नहीं है रावलपिंडी की बैटिंग में, बट स्टिल आपको ऐसी पिच के ऊपर इनफ टाइम देना है। मुझे लगता है कि लंच या लंच के 1 घंटे बाद तक अगर आप 500 550 तक रन बना लेते हैं, जो कि बना सकते हैं जैसे ये दोनों खेल रहे हैं, दैट शुड बी इनफ। फिर आप अपने बॉलर्स के पास इतना टाइम होगा कि आप 2 बार रावलपिंडी को आउट कर सकें। यहाँ क्योंकि इस पिच पर जो साद नसीम है, इनको अपने बॉलर्स को ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा। पिछले मैच में भी जल्दी अपनी इनिंग्स को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन इन्होंने बेजा तौर पर उसको तूल दिया। यहाँ पर 50 रन अपने मुकम्मल कर लिए। साद खान की उम्दा बैटिंग, स्टाइलिश लगे। 11वीं बार ये अपनी निस्फ सेंचुरी हासिल करने में कामयाब हुए। कल हालात इनके लिए ओपनर्स ने सहल बना दिए थे, बॉलर्स थके हुए थे, लेकिन इसके बावजूद ये अच्छा टैलेंट है, इसमें कोई शुबा नहीं। यहाँ बहुत ही सुपर टैलेंटेड मिडिल ऑर्डर बैटर हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट के, डोमेस्टिक क्रिकेट के। सिंध से ऑल द वे लाहौर आए हैं, लास्ट ईयर सिंध से खेले थे। ये अच्छा शॉट खेला ऑफ साइड स्वीपर की सूरत में। नौबत है, लेकिन 1 रन हासिल किया। एक बात और जो काबिल गौर है कि ये जिस तरह का फॉर्मेट है, इसमें फास्ट बॉलर्स को सोचने की और कप्तान को सोचने की ज़्यादा मोहलत मिलती है, क्योंकि अगर आप T20 इन दिनों जो ज़्यादा खेली जाती है, उसमें कप्तानों को और फास्ट बॉलर्स को नहीं सोचने का मौका मिलता। 85 मिनट में आपने निपटाना है इनिंग्स को, तो ओवर रेट की ज़्यादा फिक्र होती है बॉलर्स को और कप्तानों को। इसमें आप सोच सकते हैं, खेल की अपनी खुद सरियाँ हैं, आप नई नई चालें जो हैं वो दरियाफ्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई सोच नज़र आई नहीं है अभी तक रावलपिंडी के। हाँ, ये कहना पड़ेगा बदकिस्मती से। जहाँ कल हमें ऐसा लगा कि कोई प्लान बी नहीं नज़र नहीं आया। जिस तरीके से अहमद शहजाद और अली ज़रियाब जब पहले सेशन में खेल रहे थे, तो शायद प्लान बी ये था कि 9वें ओवर में टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने के बाद आप स्पिनर्स को ले आएँ, तो आप शो करता है कि आपके पास प्लान बी है ही नहीं। तो ये कप्तानी का काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। तो क्या आपको लगता है तारिक भाई, जब हैदर अली जैसे प्लेयर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जब वो मौजूद हैं, यंगस्टर भी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद उनको कप्तानी देनी चाहिए थी रावलपिंडी रीजन की, क्योंकि एक्सपीरियंस लेंगे, वो पाकिस्तान से खेल चुके हैं, रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसके बारे में बात करेंगे। 95 ओवर के बाद 375 पर 3। ऑफ प्लानिंग की बात कर रहे थे जो रावलपिंडी की जानिब से हमें देखी, तो आपसे जानना चाहूँगा आपकी राय कि क्या ये बेहतर होता कि रावलपिंडी हैदर अली जैसे प्लेयर को जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आए हैं, जिनको ज़्यादा एक्सपोजर हासिल है वर्ल्ड क्रिकेट का, उनको कप्तानी का मौका दिया जाता ताकि कुछ डिफरेंस नज़र आता हमें। यहाँ ये सोच सकते थे कि काउंटी क्रिकेट खेल कर आए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, शायद इंस्पायर कर पाते जहाँ, लेकिन इसमें शायद जो तजुर्बा था, ये पहले भी कप्तानी करते रहे। जब ये पहले रावलपिंडी शहर की टीम क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलती थी, तो इनने की हुई कप्तानी उमर ने। उमर अमीन जो इनके आमतौर पर कप्तान होते हैं, उनकी कमी इनको महसूस हुई है। ये कल भी बात हुई थी, लेकिन आज भी दोहराने में कोई मुज़ायका नहीं। जितना जल्दी वो आ जाएंगे, वो बेहतर इंस्पायर करते हैं और खेल के बारे में उनकी समझ है, वो बेहतर टीम खिला सकते हैं। प्लेइंग 11 जो है, कप्तान खेल में वो आगे सोचते हैं, आगे रहकर उमर अमीन।
जी हाँ, और डिफेंडिंग चैंपियन भी है नॉर्दर्न टीम को कोई कप्तानी करते थे लास्ट ईयर जब नॉर्दर्न खेली और वो ट्रॉफी जीती थी। तो दैट शोज़ कि वो उनका एक थिंकिंग माइंड है, एक अच्छे ब्रेन है उमर अमीन। और बैटिंग स्ट्रेंथ भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी रावलपिंडी की उमर अमीन के आने के बाद, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि थोड़ी वीकनेस है बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। तो शायद आपको उमर अमीन थोड़ा जल्दी आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा मौके मिलेंगे नहीं। दूसरा मैच ज़रूर है अभी, लेकिन जिस तरीके से दूसरी टीम्स पॉइंट्स हासिल कर रही हैं तो आपको जल्दी ही कुछ ना कुछ डिफरेंट करना होगा। इस अप्रोच से मुझे रावलपिंडी बहुत पीछे लग रही है इस पॉइंट्स टेबल में। और कट किया हवा में और बहुत जोर से वार किया था, इसलिए 4 रन मिल गए। काफी दुरुस्ती से सवाल उठा रहे हैं बिलावल भट्टी स्लिप से, लेकिन गेंद इतनी तेज से निकली किसी की नजर में नहीं ठहरी। ये थोड़ा अनलकी रहे बिलावल यहाँ पे, क्योंकि ऐसा लगा बहुत तेजी से गया, थोड़ा ऊपर से गया फील्डर्स के और दोनों खड़े ही रह गए, क्योंकि बहुत तेज इसी से बल्ला घुमाया था उमर खान ने। साद खान ने थोड़ी किस्मत साथ दे रही है। साद खान इस इलाके में बहुत रन बनाते हैं, इसलिए थर्ड मैन पर भी नौबत रखी गई है। ये बिलावल भट्टी जब बॉलिंग करेंगे तो जाहिर है बहुत कुछ देखने को तो मिलेगा, एक्शन तो होगा, या बाउंड्रीज आएंगी या बैट्समैन को परेशान करेंगे, क्योंकि इनका जो अग्रेशन है वो दूसरों से मुख्तलिफ है। लेकिन अभी तक हम कह सकते हैं कि ये अंडर बॉल इनको रखा गया है। अभी ये 12वां ओवर है, मुखालिफ टीम 381 रन बना चुकी और टीम के जो स्ट्राइक बॉलर हैं उन्होंने 12 ओवर्स भी पूरे नहीं किए। या टोटली एग्री करता हूं मैं आपसे। कल एक ऐसा टाइम आया था जब पहला फर्स्ट चेंज के बाद बॉलिंग करने आए थे, तो कल वाले सेशंस में इन्होंने बहुत कम बॉलिंग की है, जिसकी वजह से पीछे रह गए। फाइनली हम कुछ एग्रेशन देख रहे हैं, कुछ ऐसा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बॉलिंग देख रहे हैं, कोशिश कर देख रहे हैं। एक और अच्छी पार्टनरशिप जिसमें 51 रन बन चुके हैं चौथी विकेट के लिए। वहां से बाद तीसरी विकेट के बड़ी पार्टनरशिप सी देखी गई है। पहली विकेट की 234 रन की, दूसरी विकेट की 95 रन की, ये एक बार फिर 50 के पार हुई। लेकिन वो अच्छी बॉलिंग पार्टनरशिप हमने नहीं देखी है, दोनों एंड पर ही रन्स की बहुतात रही है, क्योंकि इस तरह के मैच में जब हालात बैटिंग के लिए सहल हो जाएं, बैट्समैन सेट हो जाएं, तो फिर बॉलिंग पार्टनरशिप्स का किरदार और बढ़ जाता है। या एक्सपेक्टेड था कि दो स्पिनर्स जो हैं मेहरान मुमताज़ और मुबस्सिर खान ये कुछ डिफरेंट करके दिखा सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी मेन वजह ये रही कि मेहरान मुमताज़ जो कि सीनियर बॉलर हैं एज अ बॉलर, तो उन्होंने कल बहुत ख़राब बॉलिंग की, बहुत फ्लैट बॉलिंग की, बहुत तेज़ बॉलिंग की, जिसकी वजह से प्रेशर जो है जो बाकी जो बॉलर्स हैं उनके ऊपर आ गया। यहाँ इस वजह से भी ये बहुत बड़ा स्कोर है कि आउटफील्ड कल सैलाबी थी और बहुत सुस्त थी सारा दिन, और फिर भी ये एक रन्स का पहाड़ सा लगता है। 381, 3 विकेट के नुकसान पे। He won for 3. Bright and breezy start for Lahore Whites on this second day. Saad Khan got past his 50. Played some attractive strokes. He'll always give you an opportunity, and he did that as well in that little session.
Again, that offside field has now been packed. 2 fielders on that drive for Saad Khan. Good time to welcome along Salman in the comm box, former Pakistan captain. Good morning, Salman. Good morning. Thank you, Faisal. I think Lahore Whites have continued the way they were batting yesterday. The intensity looks more, it looks up, and I think the strategy is there to make as many as soon as possible. A little bit more pace in the pitch today, and that's what Saad is making good use of it. The running has been good as well, pushing hard for a couple of runs. They need another 17 runs in that 3.4 overs to get to that maximum batting points inside the first 100 overs. Yes, and they have made the full use of the opportunity at hand. And I must say that Rawalpindi have not been the best fielding team. There have been opportunities go by yesterday, and even today we just saw one go through the gully, and some misfielding as well on the boundary lines. You're right, Salman. Yesterday early morning, that opportunity, and then a couple more during the day. The start today hasn't been good. Never easy to come out to field after a long, hard day. They toiled for 90 overs in the heat yesterday. It's cloudy and overcast. You would assume it's very good bowling conditions. Be interesting to see Lahore Whites, what they do, because they hold all the aces at the moment. Direct hit would have been close. Saad was scrambling. Could have been close, but I think the batter was in safely. Well judged. A quick single. Rawalpindi need wickets desperately. There we see, as he struck the ball, he started running. Good anticipation and a dive to finish the run successfully. It was well fielded by the fielder. Haider Ali, I think it was. It was superb fielding, but even better running, because he was in safely, and that was very, very tight. Yes, if you just saw the side angle, the batter was already out of his crease, and as soon as he pushed the ball towards mid-off, he started running. It's good communication, trusting the call of your partner. And also, there is no hesitation. This one is short and wide, thumped away for a single. Haider Ali it was. Look, the communication was good, and Saad is very, very quick. Although he ran at an angle, but he still made it comfortably. Good cricket all round. Yes, urgency seems to be there, and I think they have a plan to get runs as soon as possible. Nicely played, stylishly played. This is Saad Khan at his very best. You give him room, and he will punish you. Yes, overpitched again this time and fully dealt with. Beautiful stroke by Saad Khan. There we see, overpitched and waited and then middled it through the covers. Beautiful stroke. You can see it as many times as you like and you will not get bored. Such a beautiful shot. That flick with the bottom hand, Salman, did it remind you something? Yes. A bit of you in that? It's a great feeling when you time something like that. And it's 97 gone, 389 for 3 Lahore Whites. Talking about points, the point system, if you win the match outright, you get 16 points plus whatever bonus points you've accumulated during that time, and draw will give you 5 points. And there are bonus points available as well. A tie will give you 8 points, no result is 5 points.
But winning after you been followed on, you get 2 extra points, and with an innings win, you get an extra point for that too. So this means that if you play the whole match and dominate, you just get 1 point. But if you have a bad time early in the first innings, and then you recover, make a great recovery and win, so for the recovery you get 2 points. Is that so? That's on top of whatever points you got. You'll get 16 for the win, then you get the bonus points, and then 2 and 1 on top of that. So that will all add up to the 16 points and the 5 bonus. Yeah, that's what I mean. But if you play the game consistently well and you dominate it outrightly, so you just get 1 point. That's what we saw? Or that's an add-on. It's the I know, additional points. The add-ons. So that's what I mean, that if you play well consistently, you add only 1 point on top of your win. But if you were to have a follow-on and then make a recovery and win, you get 2 additional points. It's a bouncer. We haven't seen much of that. But I think Bhatti is bowling with a better rhythm today. It's Bilawal Bhatti. We haven't seen much of him as well. So you would only expect bouncers and quick deliveries from him. See, a good carry to the keeper. Very few balls have gone this high. And good aggressive bowling from Bilawal Bhatti. Rawalpindi needs a spell like that. Some inspiration for the bowlers. Edge, and once again dropped. You cannot blame bowlers. They're creating opportunity. A big clap in frustration there from Bilawal. He's been very unlucky this morning. This is Ashfaq, who's generally fielded well, but has grasped this one. Yes, there we see an opportunity go by again. This time the fielder, he tried his best, dived towards his right, full stretch, wasn't able to hold on. But we see ball doing a bit off the pitch. And as Bilawal Bhatti is bending his back, we are seeing some chances being created. There we go again. Well-controlled shot through the 2 gully fielders towards third man. And the fielder on the boundary will cover up. 2 runs to Saad Khan. And all of a sudden, the weather has changed. It's been cloudy, but it looks like it's a dust storm around Lahore. The wind has really picked up. We've seen the horizon is not clear visibly as it was just like 10 minutes ago. Look at that. Maybe there's some rain around, because on our left we can see the flags. There, the wind looks very fast over there, and the other side it's not very clear. So maybe it's raining on that side. Saad has helped it on its way, and we've just seen the ground staff also moving around. The covers, they're making it ready. It's got a bit gloomy here at the Gaddafi Stadium. Quickly the conditions have changed. There you go. GSL staff at work. 393 for 3. So we are seeing the groundsmen with the covers and getting ready in case there's rain. From the commentary box, it seems as if on our right there is rain around, and on the left the wind is blowing really fast. And there we see the umbrellas flying, the trees telling us the wind is fast. And meanwhile, Kashif Ali bowls a dot ball. Lahore would definitely want to get to that 400 real quick before the rain break, and then would ideally like not to come back out to bat after the rain break. That's what we're assuming, though we don't know what they're thinking at the moment. But this is the beauty of this longer format cricket. The condition changes, and it asks for different skills from all the players to exhibit, because this is a new dimension to the action. It was just meandering along and Lahore Whites dominating. This little twist in weather.
Yes, it's a continuous learning for the youngsters in the longer format of the game where conditions change and you have to adapt and you have to present your skill sets accordingly. You have to adjust the lines, the lengths, the time. When you get to a point where you want to declare, you have to speed up in terms of run scoring, and then it depends on the fielding captain how smart he is to slow things down for the batting side. Well, looks like Saad has the intent. Almost a slog from middle of the stump. He tried to get underneath and lift it over that fielder. Got a thick inside edge. Closing in on that 400 Lahore Whites. There's a definite plan today to speed up the scoring rate, and we don't know whether what exactly they want to get to. And the clouds are around, dark clouds, and we can see the wind blowing real fast a couple of times. Now the umpire has to hold his hat as well. It's flown away once. It's really blowing. Lifted it off his pads, brilliantly picked up. Amir Jamal has absolutely nailed it with the wind. It's flown away for a 6. Yes, a smart shot that played in the wind, middled it to perfection. There we see a great pickup shot and played smartly towards the direction the wind is blowing, and the wind is real fast and the ball took no time to get to the boundary. Look at those eyes wide open, and it made a great sound off the bat. He knew immediately. 400 is brought up. Those bonus point target has now been achieved. They have the maximum batting bonus points. Another beautiful stroke. Couldn't pierce the field though. But still that ball is pinging off the middle of the bat. There we see the umpire running after his hat. So the hats are going around. The wind is real fast. Mohammad Asif, the senior umpire in the game. And there we see a beautiful shot. It wasn't a full delivery, but the batters, they are playing so well. They're middling everything. Even if it's pitched far away from them, they're still able to middle it. It's nicely coming on the bat today. The pace has gone up in the pitch. Saad is very strong off his pads. He looks very, very elegant. Chase is on. Well done in the end. Saad will collect 3 runs. Yes, an easy 3 runs. Clipped off his toes through mid-wicket. End of the over 99. 404 for 3 Lahore Whites. Salman Butt, you've been a captain at the highest level. 400 achieved. The maximum batting bonus points achieved. What is it left for Lahore Whites to gain from this batting innings? What do you think? Well, it's just about their own satisfaction now, where they think they can get the team out twice. Seeing the stats which show that most of the games over here have been draws, but there have been different conditions to it as well. Sometimes the bowling sides just didn't have the firepower to do enough on this pitch. So seeing Lahore Whites, I think they need to declare as soon as possible. Whatever they want to get, they should hurry for that. You make a good point, because the real challenge on this pitch is getting 20 wickets. And you want to give yourself maximum time for that.
And in terms of points, there is nothing much to gain from this innings from here on end. Well, after this over, literally. Whatever Lahore Whites wants, they have the resources. They have got two set batters playing really well. They have things under control. There is no real threat in the bowling. Only Bilawal Bhatti has looked a little bit threatening because of his pace. The rest have been pretty much regulation. So it's up to them what to do next, and I think they should give themselves not more than 10 overs. It's more like Bilawal Bhatti that we expected yesterday. Saad Khan, who likes to come onto that front foot. Look at that. It's a beautiful picture of the Grand Media Center, but the clouds are threatening. And although the wind is not as fast as it was just a while ago, but it's been an interesting passage of play this first hour so far, because the run rate has been pretty good. The overall innings run rate has gone past 4. That tells you the domination of Lahore Whites. There we see a full toss, the batter unable to get it through the field, and we can sense the desperation in the bowling side as well. Bilawal Bhatti trying his best to bowl as fast as possible. He's bowling yorkers, bouncers, trying everything, not being fortunate enough. The chances he has created have not been accepted. And there we see the full toss. Saad unable to thread it through the gap. 55 runs today so far in 9.4 overs. Yeah, the previous ball went to Haider Ali at mid-off. And he is still in the picture, at the top of your picture. He is not happy because that left hand is taped very heavily. And I think he's going up to his skipper. Looks like he's been doing a lot of slip catching or something short fast catching, and the hand looks heavily taped, as you said. There we see there's a close picture of his hand, and it's been taped. There we see again, and hopefully he's fine, and hopefully he'll bat. And there we see Saad Khan just dabbing one in the gap, taking another easy single. So it's 100 overs completed. The points maximized by Lahore Whites, 405 for 3. Change in the bowling. Mubassir Khan to operate now from the college end. Saad Khan to face as the fielders go to the positions. Interesting to see what Lahore Whites' strategy would be from here onwards. That one kept low. It beat everyone. It may not just go to the fence, as we see some rain coming in as well. Just the light drizzle starting. Buys umpire signal. Yes, if the rain comes down, there we see it's already coming down. So whatever lands on the pitch before the covers arrive may just juice it up a bit. And that might be a good point to declare. Oh, that was close, inside edge, and it just bounced over the stumps. Could easily have gone on and took the bail.
playing out in front. That's back live now, straight to the fielder. That was a close shave for Saad Khan as the rain picks up here at the Gaddafi Stadium. Yes, it's coming down heavily now. The umpires have called the covers, and the time that the groundsman would take to cover the pitch, whatever water lands on it will juice it up a bit, and maybe tactically that could be the time for Lahore Whites to start bowling. To go with that rain which is going on the pitch right now, and then the covers remaining there for as long as the rain stays. Yeah, that'll be a right time. 407 now for 3 as play has been stopped here at the Gaddafi Stadium. The groundmen really need help because they have to pull this cover into the wind, and some of the players are helping them. It's pouring down now, and the pitch definitely is receiving quite a lot of water on the top surface at the moment. And we saw this in the Asia Cup recently when Pakistan played India in the first game. The first 4 overs, there wasn't much happening off the pitch. And as soon as drizzle came down, and then after the covers were removed, when Shaheen bowled next, it was far more, it was responding far more for the fast bowlers. As we see, not in this frame, but the other one, the tarpaulin has come in onto the surface, the main surface now. So it almost 3 minutes of rain it took before the covers were on. There you go. You see the middle surface being covered, not entirely still. One end of the pitch is still to be covered, so it is receiving whatever rain is coming down. And as we see the groundsmen, I think they should be fast because this will change the reaction of the pitch. And this time, this amount of water can definitely bring a change in the behavior and maybe more help for the medium pacers. Well, that is what we were discussing earlier. That's the longer format of cricket. The conditions change. Players, both batters, bowlers, will have to be ready to adapt. But even more interesting will be the decision of Lahore Whites, what they want to do when the rain break stops. Here's a look at the batting card. Yes, it's 407 for 3 Lahore Whites. Saad Khan batting on 70 has played really well. Amir came out last night and he's on 37 of 39, both putting up a good show, scoring at a high rate and getting Lahore to a position where they're thinking about when to declare. And on the top, Ali Zaryab, Ahmed Shahzad, those big hundreds that set up this whole platform. And there is the bowling card. Kashif Ali, Munir Riaz, 25 overs, 88 runs for Kashif, and Munir 14 overs, 75. So high economy rate and only 3 wickets to share between them. Merhan Mumtaz was far from impressive. 20 overs he bowled, gave away 72, was wicketless. Bilawal Bhatti wasn't fit enough yesterday, so he's bowled only 14 out of these 100 overs and given away 61 runs. Mubassir Khan, 27.3, the bowler who's bowled the most, is an off-spinner, gave away 100 runs, and at the moment they are waiting for Lahore Whites to take a decision. On day 2 of this Quaid-e-Azam Trophy clash, the play started in glorious sunshine. Some glorious stroke play as well from Amir Jamal and Saad Khan. Little bit of luck along the way. Amir played a beautiful cover drive. Saad Khan matching him stroke for stroke. With an elegant drive before the rain came. No luck for the Rawalpindi bowlers. The rain is pouring down here at the Gaddafi Stadium. As players are in the changing rooms now. We'll have to keep an eye on the proceedings. It looks like it has slowed down, but on towards our right, it's still pretty gloomy. That's where the weather is coming from. And it has to be quite a delay because all these big covers have been put on and some more have been put on to the remaining part of the square. So the news from Gaddafi Stadium is that play has been stopped due to rain, and we'll be right back with you as soon as we have any more updates or live play.